Hey guys, good morning. Welcome back to my another study vlog. I am here right at 9 a.m. and today is Saturday and also today is holiday for today is the first day of November and it's a holiday for many schools means my school has holiday on every Saturday and I think that today is the holiday of you can say the Gurdwara, the Sarkari school. Sarvodaya, the Sarvodaya, and a few children and a few schools more. So let's not talk about this. Firstly, I am here right at 9 a.m. and at this time I have not taken a bath, but I want to tell you one thing that today's weather is not so cold. Means you can say the weather yesterday and today is you can say almost moderate, not very warm and also not very hot. So let's not play with the winter and just close the fan which is right at the top. Means I was just enjoying the cold breezes in the morning. So today I am here to you can say make you a check of what I have did in these days, and you can say that after Diwali our syllabus had you can say taken up a speed at the right time. So I have just completed the whole book of our synonym antonym. Means you can say कुछ इतने पेजेस बच गए हैं टी के बाद वाले. So I'll be revising it today only, and before this I am going to complete my math, and in math I am doing the chapter permutation and combinations, which is going to over you can say in 1 or 2 days. Means I'll be trying to complete it today only cause I have a lot of time today. So let's start it without any delay. Number of word that can be formed by using the letter of the word mathematics स्टार्ट एज वेल एज एंड विद टी. मैंने क्या कहा था, जो चीज फिक्स हो जाए वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं होती. इसने कहा टी से स्टार्ट. Okay, so I am here without any goggles, and at this time I am looking quite dull cause I have just completed an 8 hours video after studying for more than you can say 4.5 hours. So our chapter of permutation and combination is over right here, and till now I have written this many pages and the revision of this many pages is still left. So now let's rest for some while cause my eyes are getting tired because of looking in the screen for so long. So I am just going to rest a little, and after that I'll be starting my you can say English means you can say word meanings, and after that I'll be starting another chapter of our maths. So our today's vlog will be going like this only cause I have to study for the psychology and for the history test in our tuition also. So I don't have that much time, but I'll be you can say doing it before 3:30 or 3 p.m. so that I could also revise for the tuition test and get ready early for my tuitions. Let's now rest for some time. Okay, so I have just again opened my another book, and today we are going to complete you can say I have read a lot of time, and also till E and F you can say I have read a lot of time. So today we will be doing from I, and the first word is idiosyncrasy, a peculiar mode of behavior, व्यवहार व विशेष अवसर संकीपन भरा तरीका. मैनरिज्म, एसेंट्रिसिटी, क्विक, फ्रीक, सिंगुलैरिटी. ठीक, तो ऐसी जो है मैं रोज़ याद करता हूँ इन्हीं वर्ड मीनिंग को, मतलब बस रीड करता हूँ. आई ओनली रीड द वर्ड्स डेली and I try to read them more than half hours daily so that my mind could memorize them for lately. Cause word meanings direct questions comes in our CUET and as well as in our board. So
I do them read daily so that I could, you can say, mark the words directly without any hesitation in the CUET and in the boards. And also it will help us in our NDA exam and more. I have to now start. I am going to read this word meaning still, you can say 4, and after that I'll be going for my tuition. And today we are having a history test. So after coming back from the tuition, I'll be telling the history marks, you can say, in the day after. So कल बताऊंगा हिस्ट्री के नंबर कितने आए हैं मेरे। तो मतलब भक्ति सूफी ट्रेडिशन का था और एक 3rd चैप्टर का था जिसका नाम महाभारत हैगा। तो मतलब किनशिप कास्ट एंड क्लास दी अर्ली सोसाइटीज उसका था। तो देखते हैं कितने नंबर आते हैं अपने। और बाकी देखो, मैंने जस्ट रियलाइज किया कि आई हैव जस्ट टर्न टू 18 एंड मोर ओवर आई लुक्ड at the children of my age and found that I am quite dull as compared to them. So I have just decided to act like more as a mature child, and moreover I'll be trying to speak in a voice which is quite deep from my existing one. So you will be seeing the changes in our you can say next vlog. I have just realized this. So sincerely I was thinking about it quite, you can say, I was thinking about it quite, मतलब पहले से ही सोच रहा था यार। और अभी जो है मतलब बस अब डिसाइड किया कि हाँ अब मतलब एकदम बच्चा सा बन के नहीं रहना है। तो अपन जो है अब से थोड़ा सा मैच्योर की तरह एक्ट करेंगे। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने तुम्हारे कमेंट पढ़ा था, ऐसा मत समझना कि द कमेंट्स विच यू पीपल टू आई नेवर रीड, मतलब आई रीड ऑल ऑफ द कमेंट बट आई डो नॉट गिव एनी हार्ट। सो मैं हार्ट नहीं देता हूँ, बस बाकी पढ़ता हूँ सारे हूँ। तो you can say a friend of mine had said to improve my communication skills, and one had said to speak in Mardani voice. So I'll be trying to do so. And moreover, a friend of mine, you can say the people who watch the videos had said to study instead of making vlogs. So guys, I study means rather than wasting my time in the reels, I study, and in the meantime I also make the vlogs. So I am preparing well. Do not you can say do not मतलब इतनी चिंता मत करो मेरी, पढ़ रहा हूँ मैं अपना बोर्ड्स का भी, CUET का भी, अपना NDA का भी, और साथ ही साथ अपना उसका भी, मतलब सही ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा चिंता मत करो। और बाकी यही मेरे को खबर देनी थी कि अब से थोड़ी मतलब मर्दानी वॉइस ट्राई करेंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है अपना। थोड़ी देर वर्ड मीनिंग्स पढ़ के निकलता हूँ सीधा ट्यूशन के लिए, और उसके बाद फिर आकर जस्ट ट्राई सो बस फिर अभी थोड़ी देर में ट्यूशन के लिए निकल जाऊँगा और फिर आके अपने थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। बाकी मेरे को पॉलिटी पढ़नी है आज। तो सही हैगा भाई अपना। बाय बाय। आज का व्लॉग करता हूँ देखो यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना। बाकी मेरे को इम्प्रूवमेंट की टिप्स जो है जो तुम लोग देता रहा करो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी ट्राइंग टू एनालाइज माई सेल्फ एंड देन गिविंग अ गुड आउटपुट बाय रिसर्चिंग ऑन योर कमेंट्स। सो मतलब समझ गए हो कि क्या बोलना चाहता हूँ। तो कमेंट जो है बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे किया करो। सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, ये मत समझना कि इग्नोर कर रहा हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो एक लाइक देना, एक कमेंट छोड़े बिना मत जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना। और बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि अब जो इस व्लॉग को मैं पे एंड कर रहा हूँ ना, तो अभी तो 4 बजने वाले हैंगे देखो। बाकी गुड नाइट वरना भी बोल ले, तो एडवांस में गुड नाइट, बाय बाय। We lift our hearts